Hey guys, good evening. A few questions that have been always asked, and I've been asked this on Instagram as well as YouTube. So I get a lot of comments related to low sperm count and also infertility. This has been equally asked by men as well as women. Okay, so we'll go ahead and first talk about men. So दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते. Okay, और मुझे कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं. I get many a times I've been asked the same questions that do we have any kind of natural remedies for infertility or low sperm count, even for erectile dysfunction. इसका मतलब नपुंसकता हुई, बांझपन हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे बहुत बार पूछा जाता है. इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेजेस आते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट्स और एनी मोर सेकेंड्स विल गो एंड स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द टॉपिक. कुछ चीज़ें हैं जो मैंने देखी है पिछले 3 सालों में, एंड दोज थिंग्स आई हैव सीन वेरी क्लियर एज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन्स for low sperm count, erectile dysfunction. One of them is loss of immunity. So when people have a loss of immunity, उनका confidence भी बहुत कम हो जाता है. और जब शरीर ही बीमार होगा, when the body becomes sick, certainly people will not be able to go and perform in the way that they need to perform. All right. So it also affects your mindset. It also affects your hormonal imbalances. All right. आपके जो हार्मोन्स रहते हैं, आपकी जो ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये भी इससे अफेक्टेड होती है, ये इससे प्रभावित होती है. इस वजह से भी नपुंसकता का बहुत बड़ा कारण है रोग प्रतिकारक शक्ति की कमी होना. अदर दैन दैट आई हैव सीन वन ऑफ द मेन रीजन दैट पीपल नॉर्मली हैव इज लैक ऑफ स्लीप. कई लोग हैं जिनको नींद अच्छी तरह से मिलती ही नहीं है. देयर आर टू मेनी पीपल हु डोंट गेट प्रॉपर स्लीप, एंड स्लीप इज वन ऑफ द मेन रीजन्स. व्हेन पीपल डोंट गेट रेस्ट, the main organs of our body do not get to recover in the way that they need to recover. And trust me guys, whether you believe it or not, even though we have our reproductive organs in between our legs, okay, still it is the top that actually controls it. So यहाँ पर उसका remote control है. आपके शरीर के अंदर कहाँ पर आपके जनेंद्रिय जहाँ पर हैं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है. तो जगह का कोई लेना देना नहीं है. क्या कंट्रोल करता है, किस चीज़ से उसका नियंत्रण होता है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सोना, नींद लेना, अच्छी तरह से चैन लेना, आराम लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रेस्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. राइट. One of the main reason, another main reason is lack or deficiency of vitamins and minerals. Now you might get vitamins from a specific off the counter, which means you go to a chemist shop or maybe you go to a store and you can get vitamins. However, minerals, you can either get it from food or you get it from plant based materials, which means you either get plant based minerals or you do not get minerals which are of good quantity and that can be absorbed properly. So it's very necessary to understand by doing some or the other test how you can go ahead and get it. Please understand that it is very necessary for each one of us to understand what exactly are you deficient in. Most of the people, most of the men, they don't even know that they could be deficient with vitamin D. All right. One of the main reasons why people can become impotent, people can have a low or less libido, or they can become infertile. So please understand that you also need to you need to go ahead and undertake some kind of blood test so that you can understand what are your deficiencies. हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आपको कोई रक्त का टेस्ट, खून का टेस्ट आपको करा लेना बहुत ज़रूरी है. तनाव, one of the main reason, one of the most popularly growing reason of infertility, erectile dysfunction, is the way that we think, because we stay in a highly distractive world. हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं जहाँ पर हम लोग कंटिन्यूसली एक दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं. वी कीप ऑन कंपेयरिंग आवर सेल्व्स विद अदर्स, एंड वी हैव टू गो हेड एंड कंपेयर आवर सेल्व्स विद another of our friends. Now I have seen a lot of people, even when they get married, we have different kind of lifestyles, and they are always under pressure that one of their friends who got married, he could go ahead and become a father or a mother very quickly, whereas it's not the same with the other person. Okay, so stop comparing yourself. We have different bodies, we have different rest mechanisms, we have different kind of lifestyles. Stop comparing yourself. Stress is one of the main reason, and comparison is just arising out of stress. All right. Now, loss of electrolytes, your kidneys, okay, and there is another one also, we call it the adrenal gland. So दोस्तों, हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो सिर्फ किडनीज ही नहीं बनाती, वो सिर्फ हमारे टेस्टिकल्स ही नहीं बनाते. इट्स नॉट जस्ट द ओवरीज. अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, देन यू विल ऑल्सो हैव द एड्रेनल ग्लैंड्स. एड्रेनल ग्लैंड्स जिसके और भी कुछ काम होते हैं. व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स? इट ऑल्सो हैज़ टू गो एंड प्रोड्यूस कॉर्टिसोल. सो आई होप यू आर गेटिंग द कनेक्शन ओवर हियर. जब हमारे शरीर में तनाव बढ़ता है तो सेक्स हार्मोन्स भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं. They can get affected very nicely. So stress is one of the reasons, and of course you need to understand electrolytes is also one of them. All right.
dependency on pornography. One of the main reasons, I've been asked about it so many times, that I have spent almost 4 hours just talking about this on my Goqii session. So if you watch any of my Goqii sessions on infertility, I've spoken about it, and people have come back and said that once they started getting deviated, they got out of the deviation of pornography. उनको जब ये मानसिकता से वो निकल गए कि उनको गंदे वीडियोस नहीं देखने हैं, अपने दिमाग को भटकाना नहीं है, they were able to perform better. They were also able to go and have a fulfilled love life with their wife, their children, and most of the other people that they are around, because the mind which is less deviated, okay, would also be more concentrated, more focused. All right, perfect. So I'm going to go ahead and show you and share a list of mine which has been shared with most of my clients. मेरे जितने भी clients हैं, you must have seen the testimonials of my clients who have gone ahead and given birth to children after even after trying IVF or maybe other things. So I'm going to go ahead and share the same things, the same natural remedies जो मैंने मेरे clients के साथ share की थी, वो मैं अभी आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ. So all that you need to do is you can just go ahead and take a photo. आप उसका एक photo ले सकते हैं और आप अपने पास रख सकते हैं. Now the things that I'm going to talk about is more about healthy fats. Your hormones are controlled by the fats that you eat. Understand this, okay? The Western world says that things should be fat free. However, India and the ancient wisdom, it could be Unani medicine, it could be Ayurveda, it could be yoga, we have believed that we need to go ahead and have an equilibrium of our body. हमारे शरीर के अंदर एक संतुलन बना रहना चाहिए, और उसको बनाने के लिए फैट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वसा की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का मैकेनिज्म है जिसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं, उसका जो ढांचा है, उसका जो फाउंडेशन है, वो हमारे हार्मोन्स है और वो फैट से बनता है. ओके, तो वो किस चीज़ से बनेगा दोस्तों? आप अखरोट है उसको अच्छी तरह से भिगो कर खा सकते हैं, आलमंड्स को भिगो कर खा सकते हैं, पिस्ताचियोस होते हैं जो मैग्नीशियम होता है. मैग्नीशियम इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर मसल्स. पोटेशियम यूज़ होता है. तो ये सारे खनिज हैं जो आप लोगों को खाने में खाने ही होंगे. ये कहाँ से मिलेंगे आपको? पिस्ताचियो से मिलेंगे, अखरोट से मिलेंगे, बादाम से मिलेंगे. यू विल गेट इट फ्रॉम वॉलनट्स, यू विल गेट इट फ्रॉम पिस्ताचियोस, यू विल गेट इट फ्रॉम almonds. These are the places where you will get good healthy fat from. Now people might be asking me, a lot of people have asked me, what if I cannot go ahead and expend so much of money? क्या होगा अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं? आप लोग नारियल का टुकड़ा खा सकते हैं, बहुत अच्छा source of fat है. Okay, other than that there is garlic and honey. People who become impotent, I have gone ahead and given them this recipe, and just within 2 weeks they have said that things started working as magic. Even for infertility, even for things when people become impotent, अगर आपका लो sperm count है तो उसमें भी थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा हनी, मतलब थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा शहद, ये आप मिलाकर खा सकते हैं. ओके, आप उसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, खा लीजिए. वाटरमेलन इज़ अ वेरी गुड कंपोनेंट एंड इट ऑल्सो गोज एंड हेल्प्स यू विद नाइट्रिक ऑक्साइड. इसका मतलब आपके शरीर के अंदर खून बहाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एन अमीनो एसिड कॉल्ड L-arginine. ये बहुत अच्छा सोर्स है. वाटरमेलन यानी तरबूज यानी कलिंगड़ जिसको हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं, वो खा लेना चाहिए. पम्पकिन सीड्स आर वेरी गुड very good in magnesium. Sunflower seeds and watermelon seeds are also very good in the same way. So you can start mixing all the seeds, grind them, उनको पीस लीजिए सारे बीजों को और उसको खाना शुरू कर दीजिए. डेट्स यानी खजूर, आप ध्यान में रख लीजिए कि डेट्स बहुत अच्छी चीज़ है. खजूर जो है इट इज़ नोन एज द वॉर फूड. ओके, आपने अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ. मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर जब जब लोग युद्ध पे जाते थे तो वो खाना नहीं लेके जाते थे. दे यूज्ड टू हैव अ कंप्लीट फूड एंड दैट इज़ कॉल्ड डेट्स. तो डेट्स का सिरप आप लोग ले सकते हैं. इट इज़ वेरी गुड फॉर मोस्ट ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू नर्वाइन. इट्स नोन एज अ नर्वाइन टॉनिक रादर देन बीइंग अ गुड फूड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ नर्वाइन टॉनिक. ये आपके शरीर को, दिमाग को बहुत अच्छी तरह से संतुलन देता है, पोषण देता है. सो प्लीज़ रिमेंबर दैट यू कैन स्टार्ट टेकिंग आइदर डेट्स, de-seeded dates, और यू कैन स्टार्ट टेकिंग डेट सिरप. खजूर का सिरप भी मिलता है, वो ले सकते हैं. एवोकाडो बहुत अच्छा है. नाउ इफ यू कैन गो एंड अफोर्ड एवोकाडो, प्लीज गो एंड स्टार्ट टेकिंग एवोकाडो. घी, आवर ओन इंटरनल सुपर फूड. घी मतलब सैचुरेटेड फैट का पूरा खजाना. प्लीज अंडरस्टैंड दैट सैचुरेटेड फैट्स आर नॉट बैड, दे आर नॉट द विलन एज दे हैव बीन प्रोजेक्टेड. सैचुरेटेड फैट्स आर गुड व्हेन वी टॉक अबाउट घी. ओके, घी की जब हम बात करते हैं और इसको ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करते हैं हम, तो घी बहुत अच्छा है. एवोकाडोज बहुत अच्छे हैं. मशरूम्स बहुत अच्छा है जिसको हम लोग गुच्छी बोलते हैं. ठीक है, हिंदी में हम उसको गुच्छी बोलते हैं, मशरूम्स बोलते हैं इंग्लिश में. यू गाइस कैन स्टार्ट टेकिंग मशरूम्स. अदर देन दैट देयर आर अ फ्यू मेडिसिन्स दैट आई विल गो एंड टॉक अबाउट राइट नाउ. अश्वगंधा विच एक्चुअली कंट्रोल्स योर पिट्यूटरी, इट मेक्स योर brain balance. Ashwagandha is a nervine tonic, and trust me guys, I have used ashwagandha for most of the people who were suffering of impotency, infertility, with women also. Okay, thyroid के बारे में मेरे जितने भी आपने client testimonials देखे हैं, if you've seen the testimonials of my thyroid clients, okay,
the female thyroid glands that I have, those who have been completely cured of thyroid, I was treating them with ashwagandha. One of the best things that you can get for pituitary gland. That is the gland that controls your thyroid. It also controls the other glands, all right? It also controls your testosterone levels. आपके जो androgens रहते हैं, male hormones, उसको भी कंट्रोल करता है. So rather than keeping it very long, let me go and rephrase it. Ashwagandha, Safed Musli, and Swarna Malini Vasant. Remember the names. I will go and put it up right before you. Just remember it. And just in case you have any questions, please put up right over there. कोई comment है, आपको कुछ पूछना है, वो कर सकते हैं. Other than that, let me come to the most important point. Now, when people cannot go and afford anything, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप एक एक्सरसाइज है, एक छोटा सा व्यायाम है, इट्स एक्सरसाइज, ओके. यू गाइज कैन गो एंड गूगल केगल्स, KEGELS, ओके. इट्स ऑलमोस्ट लाइक मूलाधार, मूलबंध जिसको हम लोग बोलते हैं. इट्स कॉल्ड द पेरिनियम, ओके. इट्स कॉल्ड द पेरिनियम. सो सपोजिंग यू आर एट अ प्लेस वेयर you want to go and go to the toilet, which means you want to go and relieve yourself of urinating, and then you cannot do that because you're in a public place. So what will you do? You will use your muscles, those perineum muscles that we have exactly in between our legs. You need to go and contract them, and you need to pull them up, okay. That's one of the best things that you can do for ED, erectile dysfunction, as well as fertility. All right, so guys, thanks a lot for attending the session. I am personally doing it so that I can go and answer all the questions for the messages that I'm getting. बहुत सारे messages आते हैं आप लोगों के, उसका जवाब भी देना था मुझे. So please go ahead and watch the recording. Everyone cannot go ahead and come to Goqii. So I understand आप सभी लोग Goqii पर नहीं आ सकते. सभी लोगों को पे करके मेरे सेशन देखना लाजमी नहीं होगा, इसीलिए मैं फेसबुक पर आया हूँ आप लोगों से बात करने के. ऑलराइट, सो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. आई सी यू गाइस लेटर ऑन. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.